Hey guys, how are you doing? Today in this video, we are going to talk about air pollution. In winters, North India, particularly Indo-Gangetic Plain, including Delhi NCR, is facing a serious threat of air pollution. And we are also going to talk about State of Global Air Report 2025 and the serious threat of those smog in 1952 in London, Los Angeles smog, Japan's industrial pollution crisis, Beijing pollution crisis, and how they fought against it, and what India can learn from all these countries or from history. So let's begin this video, and we are going to start with the newspaper headlines. And this is the headlines, and everybody, all of us are, going through these headlines. The invisible epidemic, so air pollution has now categorized as epidemic, and it is now becoming largest, health threat for India, right? Okay, so we are going to talk about first, and these are the headlines, Delhi air pollution, for example, Delhi air pollution worsens, these are the newspaper headlines. So let's begin with, this State of Global Air Report. This State of Global Air Report 2025, it says approximately 36% of world population is exposed to levels of PM 2.5 above the least stringent interim target of 35 micrograms. तो जो टारगेट है कितना होना चाहिए 35 micrograms per meter cube, and now it is going as high as 100, 200, 300. I'm going to talk about it soon. This report also suggests LMIC, they are low and middle income countries, they are facing the largest burden. 90% of all air pollution deaths were in these countries, and this is in this, you can see, this is in the South American region, this country, and this is the part of these LMIC countries which are mainly located in African continent, and then India is also in this region. Okay, so these are Southeast Asian countries. So this report again says approximately 11% of global population lives in area where there are no national air quality standard. That is again a serious threat. Air pollution continues to be the second leading risk factor for early death, which is surpassing only by high blood pressure. So deaths are high blood pressure, they are surpassed by मतलब air pollution के ऊपर सिर्फ एक ही है high blood pressure, right? Okay, next let me tell you something more about it. So in Delhi, the invisible killer PM 2.5, particulate matter 2.5, we are going to talk about it shortly. This was annual average. Can you see it is going above 400, 500, 700, this is going above, and standard is 35 or 40, again around 35 to 40 microgram per meter cube. इतना होना चाहिए, लेकिन ये जा कितना रहा है 400, 500. And this is very serious because this can go through your lungs and this can cause cardiovascular diseases, which I am going to talk about shortly. Equal menace PM10, which is slightly larger, I am going to talk about this also. So they are also increasing, and जो इसकी limit है वो कितनी है 60 microgram per meter cube. And third one is noxious NOx, and this is also notorious. NOx क्या है? Oxides of nitrogen. From basic chemistry, NO क्या होता है? Nitric oxide होता है. NO2 is called nitrogen dioxide, NO3 is nitrate, and N2O, which is global greenhouse gas, this is called dinitrogen oxide or nitrous oxide, also known as laughing gas, not nitrous oxide. तो अगर हम सीधा AQI की बात करें तो AQI में ये 3 है, उसके अलावा 8 होते हैं टोटल, है ना, इंडिया में जो हम मेजर करते हैं. तो let me tell you what is AQI. AQI is basically air quality index, which is issued by government agencies to gauge air pollution level, right? And therefore to communicate risk to the public. And if you were to talk about AQI, those are 3 I have already talked to you. So the primary जो 8 इसमें pollutants उसमें कौन है? Particulate matter 2.5. इसका मतलब 2.5 माइक्रोमीटर. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका जो डायामीटर होता है, डायामीटर इज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, and 1 micrometer is 1 part of the million, 10 raised to power minus 6 meter, simply mean 1 part of 3, 2 2 4 2 6 है ना, 6 zeros, इतना, यानी कि 1 in 1 million, 1 part of the million. They are very small, they are very very small, they can go through the what we call basically circulation of normal circulation of our blood. Then you have number 2,
है ना, उसमें क्या आता है आपके पास PM10। तो जिनका जो डायामीटर है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, दोज डायामीटर इज बिटवीन 2.5 to 10 micrometer, they are slightly larger, so maybe they are not that dangerous as 2.5. Then we have, I have already talked about this one, NOx. These are the three main culprits. Apart from this, sulfur dioxide, you should remember this, carbon monoxide, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। और उसके अलावा फिर आपके पास क्या है, छठे नंबर पर है लेड। लेड, व्हिच इज सीसा बोलते हैं जिसको, पीबी, लेड, इट इज वेरी डेंजरस, इट कैन कॉज इवन कैंसर। एंड ऑन नंबर 7 वी हैव दिस ओजोन, पर्टिकुलरली ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना। तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन। दे आर 8 पॉल्यूटेंट्स, 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, AQI में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, पर्टिकुलरली इन इंडिया। सो these 8 pollutants, they are considered while measuring AQI, right? So this is very important. And let me tell you, if you go through this AQI, so 0 to 50 is considered to be good, 50 to 100 is satisfactory, moderate is 100 to 200, 200 to 300 is considered to be poor, 300 to 400 is considered to be very poor. And यहाँ पर दिल्ली में, it is Delhi NCR region में, it is always in winter above 300. This is very serious. That even some people, they are suggesting, some news actually suggesting कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इट मस्ट बी अबव 500, जबकि हमारी लिमिट कहां तक है, केवल 500 तक है। ओके, तो द एवरेज फॉर नवंबर 2025, दिस is compared to 224 in October, in 224 in October, है ना, 345 था। 23 days, the longest streak since 2019 of very poor air, which is above 300 plus. और इससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है डेलाइट्स की, जो दिल्ली में लोग रहते हैं, उनकी कितनी घटी है, 8.2, है ना। तो 8.2 इयर्स का क्या हुआ है। हाउ डज दिस अफेक्ट बेसिकली, तो हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, हार्ट में जो डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर रिलेटेड टू द हार्ट डिजीजेस, they can cause stroke, ischemic, heart disease, heart failure, and high blood pressure. Those are the one part of this air pollution. And the other part is basically liver, spleen, and blood metabolism that can be also affected. Hepatic mean liver, है ना, hematologic and metabolic outcomes. For example, liver disease, spleen disorder, type 2 diabetes can be also aggravated by this air pollution. Reproductive systems, pregnancy outcomes, neonatal outcomes, premature birth, और छोटे बच्चों के लिए तो डेंजरस है ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर टू टॉक अबाउट ब्रेन न्यूरो डेवलपमेंट, हेडेक, है ना, उसमें हेडेक हो जाती है, एंजाइटी, हेडेक, इंपैक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दीज समथिंग इज कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्रेन ब्लड बैरियर और ब्लड ब्रेन बैरियर, आई जस्ट ट्रिपल बी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो क्या करता है, इसको भी अगर पार कर दिया इन पॉल्यूटेंट्स ने, तो दे कैन कॉज सम काइंड ऑफ headache, anxiety, and some kind of neurological problems. Even neurodegenerative diseases like dementia mean brain failure basically, है ना। Alzheimer's disease, those can be caused by these air pollutants. Then lungs disease, they are most important, COPD for example, it is called chronic obstructive pulmonary disease, है ना, तो सांस लेने में दिक्कत। तो this is what chronic obstructive pulmonary mean pulmonary का मतलब होता है related to lungs disease, and ultimately it can cause lung cancer, pneumonia is also there, skin aging is also there, right? But let me quickly tell you how it works. Those pollutants which we inhaled, they get into lungs, for example 2.5, particularly PM 2.5, and once they penetrate lungs, they goes to transmit to CV system, cardiovascular systems. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जाने से ही क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लंग्स में इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसलिए कहता है ना कि एंटीऑक्सीडेंट खाओ। इफ यू ईट एंटीऑक्सीडेंट, देन इट कैन रिड्यूस सम काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन लंग्स। देन इट कैन गो फ्रॉम हियर वेयर सीवी सिस्टम, है ना, और जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली सर्कुलेशन। एक बार ब्लड सर्कुलेशन में ये पॉल्यूटेंट्स आ गए, दे कैन गेट इनटू न्यूरल एंडोक्राइन पाथवेज, they can go to heart, they can cause altered rhythm, susceptibility to ischemia, blood vessels में constriction हो जाएगा, high BP की केस आ जाएंगे, and they can cause some kind of morbidity, mortality also, cardiovascular morbidity and mortality both. तो cardiovascular diseases क्या हो जाएंगे, for example they can cause heart problems, heart attacks, है ना,
और इन केस स्ट्रोक ऑल्सो, स्ट्रोक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी है हार्ट की वो क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाएगी, राइट, एंड इट कैन कॉज अ सीरियस सीरियस थ्रेट इन अ सेंस कि इसमें तो बहुत ही हो जाएगी, है ना. तो दैट इज द प्रॉब्लम विथ दीज एयर पॉल्यूटेंट्स. All right, let me quickly tell you something more about it. These are the breathing troubles, which is the, you can go through this. This is the recent data, how hospitals are inundated with these cases of acute respiratory syndromes or illness, basically. So these are the problems government is facing these days. Let me quickly now let's go to the what is GRAP basically. So there are graded response action plans, and they, if you can go through this diagram, it simply suggests, if air quality index in stage 1, stage 1 is 101 to 200, because 100 तक तो नॉर्मल है. तो स्टेज 1 जो ग्राफ है उसमें जो क्या है बेसिकली स्टेज 1, तो वो कब होगा जब AQI कहां तक होता, 101 to 200, राइट. तो these are the proposed changes, शिफ्ट स्ट्रिक्टर मेजर, तो स्ट्रिक्टर मेजर्स कब होंगे, जैसे जैसे AQI बढ़ेगा, राइट. स्टेज 2 is for 200 to 300, when AQI goes to 300 to 400, stage 3 of GRAP, and stage 4 is above 450. These days government has imposed basically CAQM, this is called Commission for Air Quality Management. They have what they have done actually, they have kicked in stage 4 GRAP restrictions, in which public, municipal and private offices to work at 50% of strength, work from home at central government offices. These are the stricter measures done by CAQM. Okay, so I hope you got the basic idea. And CAQM is statutory body established in 2021. So this is statutory body. आपने बेसिक पॉलिसी में पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी में स्टेचुअरी बॉडी है ना, सॉरी 2021 है ना. तो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये आया है, और इसका क्या काम है, व्हाट इज द मैंडेट, मैंडेट इज कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, इंप्लीमेंटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम arised due to AQI, है ना, और arising AQI. What is NCAP? Program of Government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched NCAP in 2019. Remember this, okay? This is also important for your exam. And it aims to improve air quality in 131 cities. So go through this all. Ambient का मतलब होता है आउटडोर, है ना. तो जो आउटडोर एयर क्वालिटी है उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए इसका क्या मैंडेट है, NCAP का मैंडेट है. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस आइडिया. Now you must ask this question, how world, it is basically, if you were to talk about, this is the diagram in Los Angeles for that matter. ये लंदन फॉग, अगर आपको आइडिया हो, लंदन स्मॉग ऑफ 1952, देयर उस टाइम तो सोचो कोई मेजरमेंट का तरीका भी नहीं था, फिर भी what they have done actually, लंदन फॉग स्मॉग 1952 में वहां पे लंदन में ये जो स्मॉग का जो सीरियस इशू था, what happened, so it remained there for around 4 to 5 days. And what happened, Clean Air Act was passed in 1956. Clean Air Act was passed in 1956 in London. They did serious research, and they found out that at the end of 1952 around 4,000 people died, due to air pollution. And later on बाद में पता चला कि जो total जो casualty थी over a period of time, it was 12,000 people, they died, and they took it serious. They passed Clean Air Act in 1956. That was the world's first major air pollution law. Okay, so there was Los Angeles में photochemical smog basically. Los Angeles smog is also famous. So Los Angeles smog, Los Angeles smog, that is that this crisis was in 1940s and 50s. And it was caused by photochemical smog. Photochemical smog, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो this was caused by photochemical smog, है ना. तो फोटो मतलब लाइट, है ना. तो it happens in bright light, and ozone and NOx, nitrogen oxide, with VOC, है ना, volatile organic compounds like benzenes, they produce photochemical smog. We are going to talk about it later on. So ऑलराइट, अगर मैं जापान की बात करूं, है ना, चाइना, बीजिंग, तो बीजिंग ने भी क्या किया, बीजिंग में 2000 के दौरान क्या हुआ था, बीजिंग में इन चाइना बेसिकली PM 2.5 एपिसोड्स बढ़े थे इन ड्यूरिंग 2000, चाइना.
तो चाइना ने इसको कंट्रोल किया, वहां पर PM 2.5 was increased and what they did actually they deindustrialized, not deindustrialized is not a right word, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो पॉल्यूटेटिंग इंडस्ट्रीज थी, है ना, पॉल्यूटेटिंग इंडस्ट्रीज, उन सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, सिटी से बाहर कर दिया था, है ना, और they took it very seriously in a very large area basically, okay, कोल बेस्ड पावर को कम कर दिया था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंडिया में जो ये प्रॉब्लम आई है, ये आई है 1990s के बाद, बिकॉज 1990s एलपीजी, है ना, एलपीजी जो अपने रिफॉर्म्स थे, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ, एंड आफ्टर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन this problem was caused. Now let me quickly go through this main issue. What is the geography, how it is basically, what is the geography of Indo-Gangetic Plain that is playing important role, that is playing very important role. So what it has to do actually, जो यहाँ की बेसिकली क्या है, ज्योग्राफी है, तो हाउ इट इज बेसिकली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, दिस ज्योग्राफिकल लोकेशन इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, है ना। तो ज्योग्राफी में क्या है, तीन चीजें, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन, कितने लोगों को आइडिया टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, प्लीज इफ यू आर watching this video, please answer, please go through the comment section and let me know what you exactly know about temperature inversion. Then other factors, meteorological factor like wind speed is also very very important. These are meteorological factors, they are affecting this air pollution. Then mixing heights, है ना, mixing heights is also important role. तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, होता क्या है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो कोल्ड एयर है ना, अगर मान लो कोई वार्म एयर ने कोल्ड एयर को टच कर दिया, है ना, एंड द कंडीशंस आर फॉर एग्जांपल लॉन्ग विंटर नाइट्स, तो फॉर एग्जांपल लॉन्ग विंटर नाइट्स, दिस कैन बी वन रीजन. देन अदर कैन बी फॉर एग्जांपल क्लियर स्काई, काम विंडो, है ना, क्लियर स्काई, calm winds, all these are the factors which are responsible temperature inversion. अब temperature inversion में क्या होता है, let me quickly tell you about this. This is normally what happens, जो air है, what it has to do, suppose this is the air, है ना, तो ये air क्या करेगी, normally जैसे जैसे basic principle क्या है physics का, कि when you heat something up, है ना, normally, and there are exception also, hot air rises, it must rise, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन ट्रोपोस्फीयर बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। अगर यहां पर एक एयर क्या हो जाए, ऐसी यहां पर कोई कोल्ड एयर फंस जाए, है ना, कैप की तरह, तो यहां पर कोल्ड एयर आ जाए एंड दिस कोल्ड एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन वार्म एयर, तो ये वार्म एयर है जो ऊपर वार्म एयर एंड दिस कोल्ड एयर इज ट्रैप्ड, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ लिड, ये ढक्कन की तरह काम कर रहा है ना, ढा से ढक्कन, इफ यू नो हिंदी, है ना, तो यू नो अबाउट दिस लैंग्वेज, तो ये लिड की तरह काम करेगा। तो जो नॉर्मल सर्कुलेशन है, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट नॉर्मल सर्कुलेशन फॉर दैट मैटर, कन्वेक्शनल करंट्स जो है, ये कन्वेक्शनल करंट्स क्या हो जाएंगी, ऊपर जा ही नहीं पाएंगी, कन्वेक्शनल करंट्स दे विल कन्फाइन टू दिस रीजन ओनली। तो अगर ये ट्रोपोस्फीयर में, if this is happening in troposphere, which is the case of Indo-Gangetic Plain, for example, this is smoke, this is smoke and pollutants, they are confined, they are confined to this region only. तो जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, उसको प्रिडिक्ट करना कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, इट इज नॉट वेरी हार्ड थिंग टू डू. गवर्नमेंट इफ विश दे कैन प्रिडिक्ट व्हेन, क्योंकि विंटर जब भी आएंगी नवंबर दिसंबर में, ऐसी कंडीशन बनेगी कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, तो ये पॉल्यूटेंट्स यहीं पे रह जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इवन फॉर दैट मैटर लेड इज देयर, ओजोन इज देयर, है ना, पार्टिकुलेट मैटर लाइक 2.5, पार्टिकुलेट मैटर लाइक 10, तो ये सारे के सारे जो यहां पर हैं, बेसिकली व्हाट दे आर गोइंग टू हैव, दे आर गोइंग टू स्टे हियर ओनली, है ना। एंड अमोनिया आल्सो, ना, अमोनिया इज आल्सो देयर, इफ वी हैव रिटन अमोनिया, तो जब भी हम AQI इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो अमोनिया मस्ट बी देयर, 8वें नंबर पे कौन था, अमोनिया, वी मिस्ड इट, सो देयर वर 8 pollutants एंड आई जस्ट रिमेंबर अमोनिया इज देयर, तो वी आल्सो टॉक अबाउट अमोनिया, राइट। तो ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कल्प्रिट, तो ज्योग्राफी इज आल्सो कल्प्रिट,
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद बीच में ये वो भी दिया था कि रिएक्टिव मेजर करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, स्मॉग हुआ, तो आपने रिएक्टिव मेजर के तौर पर क्या कर दिया, ग्रैप्स क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, है ना। दैट कैन बी प्रॉब्लम फॉर डेली वर्कर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिल्ली एनसीआर की एक प्रॉब्लम तो ये है। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली एनसीआर? अराउंड 22 मिलियन रेजिडेंट्स आर देयर, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली एनसीआर, 22 मिलियन पीपल, 22 मिलियन पीपल, है ना, 1 मिलियन इन 10 lakhs, है ना, सरल भाषा में। तो 22 मिलियन पीपल आर रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। एंड इफ यू वर टू इंक्लूड फॉर एग्जांपल गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम प्लस नोएडा, फरीदाबाद, अगर मैं दिल्ली की बात ही करूं, है ना, फरीदाबाद, है ना, नोएडा गाजियाबाद, है ना, फरीदाबाद, दिस इज कॉल्ड एनसीआर रीजन। अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन पीपल आर लिविंग हियर, है ना। और इन सारों के पास अगर मैं व्हीकल्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन व्हीकल्स आर फ्लाइंग इन दिल्ली एवरीडे, 10 मिलियन व्हीकल्स, है ना। तो जो व्हीक्यूलर जो पॉल्यूशन है, वेक्यूलर जो क्या है पॉल्यूशन है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल ज्योग्राफी है, तो अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कल्प्रिट, राइट। vehicular industrial emissions are also there, so you can talk about industrial emissions, industrial emissions are also there, okay। apart from industrial emissions you have stubble burning, है ना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन डस्ट, जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेयर, ओके। लेकिन ये कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यूरिंग कोविड-19 इंडस्ट्रीज वर शट डाउन, construction work was shut down, vehicular pollution was shut down, there was no vehicular pollution, but still there was high AQI. So geography also plays very important role, you should understand all those things, right। तो उसके अलावा है ना, stubble burning is also one, तो stubble burning near in North India, Punjab, Haryana, Western UP, etc. These are some of the right। उसके अलावा बायोमास बर्निंग इज ऑल्सो देयर, है ना। जैसे इंडिया में कोल फायर्ड रेस्टोरेंट ऑल्सो, तंदूर, है ना। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पर सारा काम किसमें होता है, तंदूर में होता है। तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो स्टबल बर्निंग, बायोमास बर्निंग, कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकुलर एंड फैक्ट्री pollution, coal fired restaurant tandoors are they are all the culprit of। so why there is pollution? And interestingly, it is not in only 2025, it is going to be in 2026, 2027 also। so it is not very difficult to predict when these things are going to be। what are the solution? let's quickly talk about solutions, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला सोल्यूशन होना चाहिए प्रिडिक्टिव पॉल्यूशन मॉडलिंग, जो मैं जिसके बारे में बात कर भी रहा हूं, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है ना। तो साइंस कैन प्रिडिक्ट इट, क्योंकि अगर लंदन 1952 में कर सकता है, तो वी आर लिविंग इन 2025, this era AI is there, there are so many things are there, right। so predictive pollution modeling, अगर हम इसको प्रिडिक्ट कर सके, है ना, और कर सकते हैं, obviously we can do that। so predictive, okay, sorry, so this writing is not coming good, pollution modeling, and आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, those who are going to take this examination। so predictive pollution modeling में क्या हो जाएगा, बेसिकली implementation के बजाय, है ना, using you guys, all of for example using your artificial intelligence, which I am talking, internet of thing, satellite data, we have made videos on satellite also। you can do use of robotics as much as you can do, or agar robotics word is not correct, then mechanized sweeping, mechanized sprinkling of water, at least to contain, sprinkling to contain, construction dust, क्योंकि dust is also very इंपोर्टेंट कल्प्रिट, राइट। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको जनरेटर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट इन विंटर्स। इफ देयर इज स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी,
तो स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी टू एलिमिनेट बेसिकली डीजल, तो जो आपके डीजल जनरेटर्स हैं those can be I mean they will be not in work, right? I hope this is clear. तो उसके अलावा there are other things also which can be done. For example, तो डेटा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? तो आपके पास अगर क्या हो एडिक्वेट मॉनिटरिंग स्टेशन हो, है ना, एडिक्वेट एआई, है ना, और उसमें क्या हो, ये नहीं कि तुमने वहां पर पानी छिड़क दिया तो AQI कम आ गया, तो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग शुड बी देयर, एटलीस्ट थ्योरेटिकली यू शुड नो देयर शुड बी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, एंड देयरफॉर these data can be basically and जो basically PM का है granular data, that plays very important role, है ना, granular data. And once you know this, you can find out how to fix it. Then fixing is there. Okay. All right. Public transport. तो public transport क्या है? That is fast, है ना? Public transport लोगों को, you can educate people to use public transport. Public transport is going to be played very important role, है ना? It is fast, it is cheap, plentiful and comfortable also, right? तो private vehicles का scrapping old vehicles हैं जो, इनको लिए incentivize them, you can incentivize them to scrap, right? उसके अलावा industries can be, for example industries, है ना, जो इंडस्ट्रीज है, खासकर पॉल्यूटेटिंग इंडस्ट्रीज है ना, पॉल्यूटेटिंग इंडस्ट्रीज, तो दीज इंडस्ट्रीज दे आर they must have some kind of stricter emission, है ना, उन पर आप स्ट्रिक्टर इमिशन क्या लगा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, है ना, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, राइट? अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल कोल क्या है, डर्टीएस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल है, तो टू गेट रिड ऑफ कोल एज फार एज पॉसिबल, बायोमास के लिए, फॉर एग्जांपल बायोमास, तो बायोमास से बचने के लिए क्या है, बेसिकली वुड, डंग, इनको क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं ना। एग्रीकल्चर में टू स्टॉप stubble burning, है ना, to stop stubble burning, what can be done scientifically, what should be done, basically paddy wheat cycle must be stopped, है ना, paddy wheat cycle must be stopped somehow, do something, but I mean you should write your answer in a way, so that it covers almost all the aspects, right? So there are different ways to do all those things, right? So you must be so we are not going to take this video too far away. Government has also introduced mission life, right? Mission life, it is basically community level pe individual and community action to protect and preserve environment, and what they say in this life theme, mission life for the environment, recognizes that Indian culture and living traditions are inherently sustainable, right? So read about it, and what it is talking about, the main heads are reduce waste, save energy, save water, say no to single use plastic, SUP, adopt sustainable food systems, adopt healthy lifestyle, reduce e-waste. These are the themes of this life, LIFE, right? Just go through this also. This is important for your exam. Now let me sum up this video with some previous year questions. This question was asked in 2022, and UPSC asked very tricky question, but you can eliminate them, right? In the context of WHO air quality guidelines, तो ये क्या कर रहा है, द 24-hour मीन ऑफ 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड एनुअल PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इन अ ईयर, हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग periods of inclement weather. Think about this. PM10 can penetrate lungs. Think about this. PM10 or PM 2.5. Excessive ozone in the air can trigger asthma. So what you have to do, you have to write your answer in the comment below. Read about CPCB. So NGT, how is the NGT different from CPCB? So this question is about National Green Tribunal 2010, right? Or CPCB के बारे में. So go through this question also. This was asked in 2018. And another question about simple air quality index. So carbon monoxide and carbon dioxide में से carbon dioxide नहीं था. Nitrogen oxide, sulfur dioxide, methane था या नहीं था, आपको भी बताना है. 8 कौन-कौन से थे? I'm not going to give the answer. And how much you can remember, how many of those 8 air quality index में जो 8 pollutants थे, how many of you can remember this? Okay, one main answer question for you. Air pollution in India has evolved from local
urban problem to a regional air set crisis with serious public health, economic, and governance implication. In this context, examine the major scientific and socio-economic factors responsible for recurring severe air pollution episodes in Indo-Gangetic Plains. Read about it. Drawing lessons from international experience such as London, Los Angeles, Japan, है ना, बीजिंग क्रिटिकली इवेल्युएट. और जापान के बारे में आपको बता दूं, जापान में स्मॉग, सीरियस स्मॉग की प्रॉब्लम थी एट अ प्लेस कॉल्ड योकैची. यू नो, इट इज अ प्लेस इन जापान. आई फॉरगॉट टू टेल यू योकैची, you know, and please check the spelling, but something like that. There is one city Yokkaichi in Japan. और जापान में 1950s में, 1950s and 60s में there is it was famous for, you know, smog, and which was sulfur dioxide, basically, particularly sulfur dioxide, and it is famous for Yokkaichi asthma, you know, Yokkaichi asthma, because people were asthmatic and they had problems like bronchitis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, and heart failure also. Do talk about CAQM, GRAP, and NCAP. Suggest a multi-level strategy to ensure sustainable improvement in air quality index. So, air quality in India. So, thank you so very much. I hope this video was useful for you. And if you like the video, don't forget to like, share button. Don't forget to subscribe our channel. And most importantly, if you know the answer, if you want to try these questions, please do comment about your answers. Okay. See you guys until next time. Till then, goodbye. Thank you so very much.